अच्छा जी, सो क्वेश्चन जो है वो आपका गुड नेम इकबाल साहब। इकबाल साहब का सवाल ये है कि जो टॉपिक है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और एक इंटरनेशनल टॉपिक भी हो सकता है। और आप एक यू आर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ से डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ समथिंग फॉर समथिंग विच यू आर ट्राइंग टू से देयर इज आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा। अच्छा जी, तो साथ वाली क्लास में बात हो रही है दोपहर में सोने की। सो दोपहर में आपको जरूर जो है वो एक आध घंटा जो है वो रेस्ट करना चाहिए। इट्स समथिंग गुड ऑन योर हेल्थ एज वेल एज योर वर्क रूटीन। ठीक, 1 आवर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 आवर करें, 2 आवर करें, बट करें जरूर। 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, एक पावर नैप होती है, पावर नैप ले लें जिस तरह इस क्लास में कुछ लोग ले रहे हैं, तो वो भी ठीक है। Okay, let me just connect it first and then I just respond to your question. Okay, so हमने जो चीज अभी कवर कर ली है, that was in fact we completed various bodies which are involved in evaluation of your two stages of thesis, TH1 and TH2, and we saw that maximum check is at proposal defense stage. Thesis defense, there is only one body, which is in fact your external and internal, who evaluates by the end of semester and give you grade. Okay, now coming on to your question, topic selection पे आपका सवाल था, which was के could it be a generalized topic, could it be a local topic, or should we go towards something which is a global topic? So my answer to that is research is always done on a topic which is globally accepted. You never do research on a localized topic. But remember, your problem is not only your problem. A problem in KPK is not only limited to KPK. That problem is will always be there around the globe. It's you who has to portray it like that and include the related references so that it comes or it becomes a global topic. For example, the topic which you said yourself, can you repeat that? क्या topic था? Comparative analysis of ore segregates. You are from civil engineering? Okay, so what do you mean by ore segregates? Because I lack in some of the Bajri. I don't get this word as well. मैंने कभी इस लफ्ज़ को पहले इस्तेमाल नहीं. Crush. Okay, crush. So again, repeat कीजिएगा. What is the topic? Comparative analysis of. Can I raise this on the board? Okay. Thank you. बहुत शुक्रिया. Good. जिंदगी में तरक्की करो. ठीक है. Give respect to your teachers. You will always prosper in your life. अच्छा जी, मैं अभी आपको जो चीज बता रहा हूँ वो ये है कि आपने जो okay, repeat your topic please. Comparative analysis of most aggregate deposits. Core, am I right? Core, OARS. दोबारा बताइए क्या है स्पेलिंग बताएं. OARS. COARS. ARS. Course.
ये सिर्फ ये वो सब्जेक्ट वाले कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। कोर्स आगे क्या है, सेग्रीगेट एग्रीगेट डिपॉजिट्स एंड केपीके। अच्छा मुझे सादे लफ्ज़ में अगर आप बताओ कि ये इनफैक्ट आप कोर्स एग्रीगेट्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सर जहाँ से क्रश बनती है सर पत्थर से। ओके तो ये कर रहे होते हैं कि जो है ना प्रोजेक्ट्स में मरकला की हम कोर्स एग्रीगेट के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइक यहाँ से अगर आप एग्रीगेट ट्रैवल करें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है ट्रैवलिंग पे भी और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। ओके अगर वहाँ पे हम लोकल जो कोर्स एग्रीगेट डिपॉजिट्स हैं वहाँ से ही हम क्रश हासिल कर लें, लाइक लाजमी बात है हमें टेस्टिंग करनी होगी, जो टेस्टिंग में ठीक है वो भी कोई यूज कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम और कॉस्ट सेव। सही है सही है। तो इनफैक्ट ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव आप करना चाह रहे हो। एक आपने आप एक मार्केट में बैठे हुए हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोर्स व्हिच कुड गिव यू अ बेटर क्वालिटी क्रश। इस जगह में सिंपलीफाइड टर्म में बात करूं कि आप यू हैव एन ऑप्शन ओके कि यू कैन कलेक्ट द सिमिलर क्रश फ्रॉम 30 to 50, another source is in KPK, another source is in SIND. So you have seen three sources and you figured out okay, the easiest, closest and better quality source is available at KPK. Could be one of the outcome of this. Am I right? But the aim is to get the good quality crush. ऐसे ही है for business perspective. So the aim is to save the cost and agree, save the cost, but for a businessman who is doing this business, he has 3 sources available, 4 sources available, 10 sources available. और वो मार्केट में बैठ के सोच रहा है कि which source is the closest in terms of मैंने सारा इसकी लॉजिस्टिक्स को संभालना है, तो फिर मुझे परचेज करना है, तो कॉस्ट इफेक्ट एज वेल एज उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन, रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो मेरा अच्छा हो जाए। तो once I do the analysis I figured out okay जी 50 भी ठीक है, बट 50 में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, चीज भी महंगी है क्योंकि ये कैपिटल है। केपीके में जाता हूँ तो ठीक है, मेरा खर्चा आने जाने का थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो गई है और ओवरऑल कॉस्ट में फिर भी कम है। ठीक है, so it means you are trying to do this is a research. This is a research. This is a research. मैंने आपसे क्लास में कहा था कि we are always doing some research. There are certain informal researches, certain formal researches. This topic cannot be considered as a thesis research topic. It's not a formal research. It is informal research which you are trying to do, or a businessman is trying to do to figure out the best solution for his business. Right? इसमें कोई research का domain, formal research का कोई flavor नहीं। तो बेसिकली ये एमएसबीएम की पर्सपेक्टिव में नहीं है, अगर आप सीधे की पर्सपेक्टिव में देखें तो उसमें हमने टेस्टिंग करके और क्वालिटी एश्योर करनी है एग्रीगेट। सीधे की पर्सपेक्टिव पे टॉपिक है, ये एमएसबीएम का टॉपिक है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। देखें, ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक भी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक उस सूरत में बनता है जब आप वो टाइटल में वो चीज लेकर आए। इसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। This title is simply saying this, that you are trying to analyze 4-5 sources and figure out which one is good in quality vis-a-vis cost effect. It cannot be a civil engineering thesis topic. It cannot be a project management thesis topic. Yes, research तो हर वक्त आप करते हैं। अब आप ये कहें कि जी मैंने आज कपड़े कौन से पहनने हैं और मैं एनालिसिस करूं सुबह अपने वार्डरोब का कि जी 10 कपड़े लटके हुए हैं, मैंने ये कपड़ा पहनना है और मैं उसको थीसिस टॉपिक बना लूं, तो वो नहीं बन सकता ना। बट इट्स अ रिसर्च टॉपिक, बट इट्स नॉट अ फॉर्मल रिसर्च टॉपिक, राइट। सो ये उस तरह की एक चीज है। हम सब ने विद एक्सपीरियंस जितना हम पढ़ते जाएंगे ये चीज ही हमने फिगर आउट करनी है कि हमने टॉपिक सेलेक्ट भी करना है कि नहीं करना। और वो 3 बॉडीज जो मैंने आपको दिखाई है ना, वो भी इसीलिए बैठी हुई है कि वो आपके इस टॉपिक की ग्रिलिंग करेंगी कि टॉपिक थीसिस का टॉपिक ही नहीं है। तो आइदर ये रिजेक्ट होगा ईसीपी पे, ईसीपी में आपने कन्विंस कर लिया आपने आइदर को, तो रिजेक्ट होगा ये जीएससी पे, जीएससी भी अगर बात की तो जीएसआरएमसी इसको रिजेक्ट कर देगा। Let me just switch off some of the participants. मिया शाहिद जी सर, समझा पाएंगे? आपकी आवाज अननेसेसरी खुली हुई थी जी, कैंडी बंद रखिएगा ताकि क्लास में शोर ना हो। ना सर, आपकी बात समझ, आपको मेरी बात समझ रही है? देखिए, आई एम नॉट, मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों को क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हम हर वक्त रिसर्च कर रहे हैं।
लेकिन हर रिसर्च का जो टाइटल है वो थीसिस का टाइटल नहीं बन सकता, राइट? बहुत सारे ऐसे काम है जो हम किसी प्रोजेक्ट के जुमरे में कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे रेगुलर अफेयर्स हैं। अब ये एक रेगुलर अफेयर है जो कि कोई भी बंदा किसी वक्त बैठ के कर सकता है, इसमें कोई रिसर्च का जायका नहीं है। आई मीन बाय रिसर्च आई मीन फॉर्मल रिसर्च का जायका नहीं है, ठीक है? इसलिए इट कैन नॉट बी अ टॉपिक। यस, अब मैं आता हूँ आपके उस पे पॉइंट पे जो साजिद ने कहा कि आप इस कोर्स एग्रीगेट डिपॉजिट्स के ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, इसकी कोई एनालिसिस की टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे आप होमवर्क करना चाह रहे हैं कि जी एक टेक्निक ये है, एक टेक्निक ये है, और मैं एक नई टेक्निक प्रपोज करूंगा जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से ये एनालिसिस करके मुझे दे सकती है, बट दैट शुड बी अ साइंटिफिक टेक्निक। वो सिर्फ ये नहीं कि जी आरती से बात की, उससे बात की, उससे बात की, तो उसने मुझे एक अप्रोच बता दी। नहीं, इट हैज टू बी अ फॉर्मल अप्रोच, verified and available in the literature, which you can publish once you do it. समझ गए? उसको हम लेके चल सकते हैं। वो सब सिविल इंजीनियरिंग का रिसर्च बन जाएगी क्या? वो डेफिनेटली जब आप उसको करेंगे, देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर रिसर्च करनी है तो इट शुड बी समथिंग व्हिच शुड बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिसिस। और अभी आपको मैं जो रिसर्च पेपर्स कह रहा हूँ ना, उसमें आप रिसर्च पेपर ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको मुख्तलिफ डोमेन के रिसर्च पेपर नजर आएंगे। आपने विद एक्सपीरियंस इन कंसल्टेशन विद योर सुपरवाइजर फिगर आउट करना है कि ये टॉपिक है, ये पेपर है जो मुझसे रिलेटेड है, ये नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये कंप्यूटर साइंस है, ठीक है? आज तक सब पता चल जाएगा, यू विल योरसेल्फ कम टू नो, राइट? अच्छा, इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है, इधर एक कीवर्ड है कंपैरेटिव एनालिसिस का। मेरी आवाज ऑनलाइन आ रही है जी सबको? जी सर, आ रही है। यस सर। जब मैं मूव करता हूँ तब भी आती है ना आवाज आपको? यस सर। जी सर, आ रही है आवाज। हल्की जरूर होगी, लेकिन ये कि रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा मैंने बोर्ड के ऊपर लिखना भी है तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करना है आपने, और बाद में लेक्चर देख के बेशक उसको आप कवर कर लीजिएगा अगर आवाज ना आए। बात कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आवाज आए आपको। पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूँ जी, एक तो इनका टॉपिक के अंदर हमने ये फॉर्मेलिटी ऑफ रिसर्च वी हैव टू ब्रिंग इन, द फॉर्मल रिसर्च शुड बी शोन, शुड बी विजिबल इन द टॉपिक, नंबर 1. नंबर 2, there is a keyword used here, comparative analysis. Remember, comparative analysis cannot be title. This word should not be used in the title, because everybody out of you during his her research or thesis phase will do a comparative analysis. It is requirement of a thesis that whatever technique you propose, whatever method you try to follow, you will always compare it with some existing methods. You will always do it. There will be one chapter in your thesis which would be chapter titled as performance evaluation, comparative analysis. So this is a compulsory tick mark. Once it is a compulsory tick mark, you need not to mention it in the title, because title only requires keywords of your approach and your problem domain. So here the keywords should be, first of all, there should be some keywords for the problem you are addressing. The problem which you are addressing, some keywords of that. Then some keywords of the approach which you are following or trying to follow. Right? उस अप्रोच का कोई नाम होगा, और ब्रॉड नेम होगा, और फिर अप्रोच कोई मेथड भी फॉलो कर रही होगी, तो मे बी द मेथड ऑफ द अप्रोच और द स्टेप्स ऑफ द अप्रोच, इसको हम कह सकते हैं, these could also become part of the title. So title is made up of some of these keywords. It does not contain any keyword like comparative analysis, performance evaluation. No, because once you do this, for completion of thesis, this is a must thing which you will ultimately do. So याद रखिए कि इस तरह का कोई एक टाइटल डिफाइन होगा which would be something based on these keywords. But it's a good question because it clarifies number of things which you will problematically face later on. So ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें एक और चीज हमने सीखी वो ये कि always जो आपका basic question था, the title has to be a global problem. You cannot work on a local problem because you do not want. The ultimate aim of our research is that you would like to publish it yourself, because you have done something good, so you will like that other people should know what you have done. So once you will go in the publication cycle,
your reviewers will not accept that work which is only applicable to a small segment of society or a small village of Pakistan or a small city of Pakistan. They will see there is nothing attractive in this for us because we want that it should be readable. Why would I read it if it's applicable to me? The papers which you are figuring out, you are only reading because they are applicable to you. If you already mentioned comparative analysis of post-aggregate deposits in KPK, who will read other than KPK people? Why would a person sitting in USA will read it? आपने खुद ही कह दिया जी मेरा तो काम ही KPK पे applicable है। ये मैंने इसके ऊपर like years तक मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे अब इसको जनरल अप्लाई कर रहा हूँ ना। if you mention इसकी बात अभी नहीं करते, इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल लिंक कर रहा हूँ कि अगर आप टाइटल में एक कीवर्ड यूज कर लेंगे जो कि किसी लोकल डोमेन को शो कर रहा होगा, आप अपने को अप्लाई करके देखिए, आपको पेपर में नजर आता है कि एप्लीकेबल टू कीनिया। आप कहते हैं कीनिया मसला मेरा तो मसला ही सीरियस है, या आपका रिकॉर्ड इंडिया मान लो कि ये लोकलाइज का कोई पर्सनल इशू है। So try to align it with your own thinking. Anybody who is reading a research paper or trying to make it a reference for his or her work, he or she will always look for a topic which is applicable to them. So अगर if you mention it, then maybe only you know that applicability है दुनिया में, लेकिन 80% लोग तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं। maybe 5% लोगों को आपकी तरफ पता होगा, वो बोल लेगा उसको ठीक है, लेकिन आपने अपनी लीडरशिप को कम कर दिया। 80% लीडरशिप because of your wrong choice of selection of words has left that out. So to make it applicable to maximum population, you need to make use of these keywords, avoid these words, avoid localized words. Yes, remember every thesis is done with some of the localized data. So always you collect something from your local sources, but you do not mention it in your title. There will always be a case study. ऐसे ही होगा ना? You cannot do anything which मतलब आपने एक सिमुलेशन करनी है तो आपको डाटा तो अपनी अवेलेबल किसी बैंक से, किसी इन्वेस्टमेंट सेक्टर से, कहीं आपको किसी टीचिंग सेक्टर से, आपको वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप उसको बिल्कुल इस तरह से टाइटल में मेंशन नहीं करते। जब आप अपना थीसिस लिखते हैं, जब अपना पेपर लिखते हैं, include over there, mention okay, this is a case study which I am considering. If you are conversion, there is a concept population and sample size. आपने स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, आपने पढ़ा होगा क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स के अंदर क्वालिटी या किसी एक रिलेटेड टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में जहां पे यू टॉक ऑफ applicability of a sample size onto a whole population. You always do research on a small sample, but you select sample based on some facts, some figures, and then you say, okay, if I find some results on this sample, it is applicable to the whole population. And once we talk of population, तो वो सेक्टर दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करता है। लाइक सीमेंट सेक्टर में आप रिसर्च कर रहे हो तो आप डाटा तो पाकिस्तान से ही लोगे, लेकिन सीमेंट सेक्टर दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है। तो आप जो अपना सैंपल साइज सिलेक्ट करोगे वो उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेस पे सिलेक्ट करोगे जिसकी बेस पे आप क्लेम कर सकेंगे कि जो आपने रिसर्च करके कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री में इसी तरह से एप्लीकेबल है बिकॉज़ मेरा सैंपल साइज पे ये क्वालिटी थी। राइट, नाउ यू डू इट फ्रॉम केपीके, यू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम केपीके, but keep that in mind कि मैंने वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पिक करने, so now my data is of course collected from KPK, but my results are applicable to USA, to China, to England, to India, everybody, because my sample size fulfills this requirement. Every research in the world is always done on a sample, but with some conditions, and they claim I fulfilled these things. आप चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं या आपने एप्लीकेबल, and you avoid these words in your titles. Saying this, you will find papers in which people have used these words. You will find pieces where people have used these words. But I am telling you the ideal combinations. If you use such like words, it will weaken your visibility. It will weaken your chances of readability to other people. Right? So I hope I have answered from your question or answered to many other queries जो लोगों के दिमाग में शायद आ रही होती हैं
ये चीजें यूज नहीं करनी होती, ना ही इस तरह का काम करना होता है, ठीक है। एंड आवर जॉब ड्यूरिंग दिस सब्जेक्ट इज टू करेक्ट योर टाइटल. Once you will present, inshallah, not today, next class. So I'll apply this correction, and you will yourself apply this correction first, because abhi aapko pata chal gaya. So once you come up with a topic, you should think on these lines, right? ठीक है जी. So I hope this makes sense. आपको चीज, everybody is clear? Amjad, you're fine. You're getting my words. अब तो आप, you must be knowing lot of Urdu as well. बल्कि इंग्लिश से अच्छी तो उर्दू आती होगी आपको समझ, थोड़ा थोड़ा आता है. किसके साथ रह रहे हो आप? You are living in hostel alone? You should live in some hostel along with some people. If you would like to learn the local language, that is the solution. But I don't know, now you have to return back. Now it's late. But you would have been much easier to comprehend different things if you would have taken somebody or asked somebody out of them to live with you. They will be happy to live because they have the hostel issues. You can keep them free of cost with you. So there will be people who will be willing. Leaving that aside, do ask the question if you do not get my words, right, Amjad? Because I feel that sometimes you are sort of not following certain things, but do ask those questions. Okay, so with this background, now I have tried to address one of the major concerns. No localized problem. The problem should be global problem, and use the keywords from the problem domain, from the solution domain, and then define a title. That would be a better thing, and it all should always support by research papers. Haji sir. सर एक प्रॉब्लम जो नेशनल लेवल पे फेल है, पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम, उसको हम अपना रिसर्च टॉपिक बना सर बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए, नेशनल लेवल प्रॉब्लम जो आपका होता है वो दुनिया भर में वैसे ही नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं ना. तो आप सोच रहे हो कि नेशनल लेवल प्रॉब्लम है, बट वो नेशनल लेवल प्रॉब्लम दुनिया की हर नेशन को कहीं ना कहीं फेस हुआ है. सर अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट का जो फ्री सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है पीएसडी, ओके, वो भी पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में? आर यू श्योर? पीएसडी पीएसडीपी के नाम से यहाँ पे है, लेकिन वैसे तो दुनिया भर में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है. हाउ कैन यू से कि आप पीएसडीपी के नाम से नहीं होती होगी? ठीक है, ये पीएसडीपी का वर्ड पाकिस्तान में यूज होता होगा, लेकिन ये काम तो दुनिया भर में होता है और इसकी टेक्निक अप्रोचेज है ना, तो आप काम कर सकते हैं. तो आप यू शुड नॉट यूज के जी मैं सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. सैंपल पाकिस्तान का लेंगे आप, उसमें कोई बुराई नहीं है. सर इसमें पॉलिसी इश्यूज है जो मतलब मैंने जो सेट करना चाह रहा हूँ जॉब से रिलेटेड. ओके, यानी कि मतलब कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. हाँ, आपने करना क्या है कि उस पॉलिसी, अब वो पॉलिसी इश्यूज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में. तो आपने उनको सपोर्ट करना है विद द पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स. अगर आपको वो पॉलिसी इश्यूज दुनिया भर में नजर आते हैं उन पेपर्स के अंदर, फिर आप उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली लेकर आए. उनके सोल्यूशंस भी लोगों ने प्रपोज किए होंगे. आई रिपीट, अपने कुएं में बैठ के नहीं बात करनी है. सी व्हाट अदर पीपल हैव डन, देन यू विल एक्चुअली बी फाइंडिंग आउट द राइट सोल्यूशन. अदरवाइज आपके नजर में जो सोल्यूशन है वो आपका सोल्यूशन है, और वो एक ग्लास के अंदर है, ग्लास के बाहर पूरी दुनिया है जिन्होंने उस पर बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा काम किया हुआ है. तो व्हाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर वर्क? ठीक है, तो ये माइंडसेट हम सब ने चेंज करना है. We should not just think or sitting in our rooms, we should not just decide the solution. We should first see the solutions. क्या लोगों ने solutions दिए, then come out के okay, I should do this. कुछ mistake थी मेरी thinking में, और there will always be, हमेशा होगी. कभी भी इंसान इंडिविजुअल कैपेसिटी में ठीक फैसला नहीं करता. मशवरा करने का हुक्म क्यों दिया गया है या क्यों कहा गया है कि मशवरा करें आप? क्योंकि आपको 5-6 व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं और फिर आप जो फैसला करते हैं वो एक अच्छा फैसला होता है. ठीक है, हिस्ट्री कहती है, हमारा अपना दीन कहता है, सुन्नत कहती है कि आप हमेशा मशवरा करें फिर फैसला करें, इंडिविजुअल फैसला नहीं करें. ये मशवरा है. You are looking at different people's work and then you are coming out with a solution which could be much better worked out than in your own capacity. So, जी इकबाल. मैंने भी 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. वो जब एग्जैक्ट्स पढ़े तो हमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं यार इस चीज पे मुझे काम करना चाहिए.
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा गैप में फील करता हूँ। कोई बात नहीं। आप आपने उसको ना अपनी आपने सोचना ये कि ये एक लिहाज से बाज़ औक़ात अच्छा भी होता है कि आप ना प्री ऑक्यूपाइड नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश दिमाग से सोच रहे हैं। बाज़ औक़ात प्री ऑक्यूपेशन इज बैड इफ यू आर प्री कंसीव्ड और बायस्ड फ्रॉम योर अर्ली करियर ऑन अ सिंगल टॉपिक, देन आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप वही सोचते रहते हैं कि मैंने यही करना है। अभी आप बिल्कुल ओपन होकर सोचोगे, काम तो करना ही था किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, पहले कुछ शायद आपको हाथ पकड़ के कोई काम हो जाता, अब आपने प्योरली अपने लिहाज से सोचना। तो बी ओपन माइंडेड, स्टार्ट रीडिंग रिसर्च पेपर्स, एंड यू हैव योर डीएनए इन योर ब्रेन, यू हैव योर स्पेशलिटी इन योर सेल्फ। आपको अल्लाह ने जब बनाया ना, वो इन सब की तरह नहीं बनाया। तो वो जो आपकी स्पेशलिटी है ना, वो ऑटो पे एक्टिव होगी, ट्रिगर होगी जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, और आपको नजर आएगा यार कि ये चीज है जो मुझे अच्छी थी मेरे लिए हमेशा से, इधर मुझे जाना चाहिए। अब उसका तरीका क्या है, जितना कितनी जल्दी वो आएगा, द मोर यू रीड, द मोर टाइम यू गिव, द अर्लियर यू विल कन्वर्ज। राइट, परेशान नहीं होना, उसको पॉजिटिव लें। एवरी वीकनेस इज एन अपॉर्चुनिटी। If you start thinking like this, you will prosper, you will grow. ठीक है, तो हाँ, तो बिल्कुल इस तरह से देखें। अच्छा, अभी हम आते हैं जी, अब आप चूंकि रिसर्च पेपर्स, वी आर इनटू द रीडिंग स्टेज। मैंने आपसे कहा था कि the requirement of this subject is that we will study certain things on reading, we'll study certain things on writing, and then we'll also do presentation sessions in various things जिसमें दोनों चीजें कवर हो रही होंगी। तो अब हम रीडिंग के ऊपर कुछ बातें करते हैं। जब हम रिसर्च पेपर्स की बात करते हैं, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिसर्च पेपर्स, यू विल फिगर आउट फ्रॉम वंस यू फाइंड आउट। अभी भी आपने पेपर पढ़ने शुरू किए हैं या देखे होंगे, तो आपको वहां पे दो कैटेगरीज नजर आई होंगी। इट इज 15 मिनट रह गए 3 बजने में। चलें, वी विल कवर वन कैटेगरी, कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स हम कवर करेंगे। अच्छा, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड से, ये मैंने जो दो कैटेगरी इधर लिखी है, ऊपर लिखी हुई है, तो आपको आपने इसमें कुछ फर्क या कोई इस तरह से सोचा आपने, डिड यू सी सर्टेन थिंग्स, क्या ऐसा नजर आया आपको? अभी आपने 5 पेपर्स देखे ना अपने डोमेन के अंदर, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आपने रिसर्च पेपर ढूंढे, तो क्या आप उसमें बाइफरकेट कर सकते हैं कि दीज आर द कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड दीज आर द जर्नल पेपर्स? कैन एवरीबॉडी आउट ऑफ यू डू दैट? और या ये नाम पहली दफा सुने आपने? एनीबॉडी हु हैज लिसन्ड टू दीज वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड जर्नल पेपर? आपका नाम क्या है? ठीक है, इफ यू हैव इसमें, हाँ, आर्टिकल असल में देखें, दोनों में आर्टिकल्स फॉलो। आर्टिकल तो एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल कुड बी अ कॉन्फ्रेंस आर्टिकल, कुड बी अ जर्नल आर्टिकल। सो आर्टिकल कोई कैटेगरी नहीं है, आर्टिकल तो एक सेट ऑफ आइडियाज है जो आपने एक जगह लिखे हैं। अब वो सेट ऑफ आइडियाज आप एक कॉन्फ्रेंस पेपर में पब्लिश कर लेते हैं या आप एक जर्नल में पब्लिश कर लेते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरीज आर टू, either there is a conference publication, conference article, conference paper, or there is a journal article, journal paper, journal publication. There are two categories. अब इनमें क्या फर्क है वो हमें क्लियर होना चाहिए। Before I go on to the journal article, let's see first what a conference article is. What's your name? जी, हुमा। किस्मत का हुमा उड़ के किसके सर पे बैठेगा, बताएं। हाँ, क्या होते हैं? अच्छा, और कोई चीज इसके अलावा? अभी आपने जो पेपर्स देखे उनमें आपको कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर्स अलग अलग नजर आए हैं? कुछ आपने इस पर्सपेक्टिव से सोचा कि मैं जो पेपर पढ़ रही हूँ या शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ, उसमें ये पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर है, ये पेपर जर्नल पेपर है? Anybody out of you? All of you have some papers. Can you open those papers? Maybe अभी आपके सामने, और क्या उसमें देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की क्लासिफिकेशन या सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि मेरे ये पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर है, ये पेपर जर्नल पेपर है? चलें, ये एक मोटे तौर पे आपसे कुछ इस तरह की बात होती है। बट क्या आपने पेपर अभी जो है उनमें कोई ऐसी चीजें टिक करें नजर उन पेपर्स में, आपने जो फिगर आउट की, ये मेरे कॉन्फ्रेंस पेपर है, ये मेरे जर्नल पेपर कर चुकी हैं? अगर आप क्लियर है तो ठीक है। मतलब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि if you already have that segregation with you, what is a conference paper? When a paper becomes a conference paper and when it is not a conference paper?
ओके गुड, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाए। ओके जी, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन एक दिस इज वन पॉइंट के जी, देयर इज सम पेपर व्हिच इज प्रेजेंटेड इन अ कॉन्फ्रेंस, सो नाउ माय नेक्स्ट प्रोसीडिंग, उसकी कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पब्लिश हो जाता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्फ्रेंस? Why we call it a conference? Why we call it a journal? It's a group of people coming from different regional backgrounds. Okay. They come up at a place and present their work. And the conference is usually chaired by some university HODs. Like many applying the paper present the other university. डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मतलब उसको रेड किया वो चेयर, और वो इन सब की प्रेजेंटेशंस जो है ना उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, फाइनली प्रोसीडिंग में पब्लिश। ओके, क्या ये आइडिया सबको समझ आ रहा है, रेस्ट ऑफ द पीपल जो इन्होंने कहा है? बिकॉज शी हैज experienced something, so she is more conversant with certain things. Okay, कि जी कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरह से होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने इवेंट कराया, उसके अंदर उन्होंने सब लोगों को मुख्तलिफ जगहों से कहा कि आप आके प्रेजेंट करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने से एक और करना है कि जी वो पेपर का सबमिशन और रिव्यू प्रोसेस क्या था, लेकिन ये बार लोग जमा हुए, शी प्रेजेंटेड एंड लेटर ऑन दैट कॉन्फ्रेंस published a proceeding named as proceeding, in which all the research papers who were presented by people in that gathering were printed. This is what she said, right? Okay, so now next question is how you were selected to present that work. So basically, Anybody else can also answer. Agar somebody else has published a paper in a conference or knows something about conference from this side. शाब कुछ चीज आइडिया है पहले कॉन्फ्रेंस पेपर का? नहीं है? हाँ समर, आपका नाम भूल गया हूँ। अहमद अनवर, ठीक है जी। आपका नाम इमरान। कभी कोई पहले कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ चीज और सुनी हो? आप एक मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपको तो पता है ना, तो लेट्स सी जो इधर से लोग जिन्होंने थोड़ा सा इनका भी दिमाग हिलेगा ना, वो रुका हुआ होता है कुछ। न्यू आइडियाज तो दोनों जगह पे होते हैं, लेकिन ये कि कॉन्फ्रेंस के लिए से उन्होंने एक तरीका बताया। अब उस कॉन्फ्रेंस में आपको कैसे बुलाया जाता है, ये सवाल है मेरा। हाउ अ पर्सन इज आस्क्ड टू प्रेजेंट इन अ कॉन्फ्रेंस। फिर पेपर पब्लिश होगा ना बाद में उसका। हाँ जी, आपका नाम क्या? लास्ट कामरान जी। कैसे? थ्रू मेल करा चले, हाँ ऐसे ही मोटे तौर पे होगा, लेकिन फिर क्या होगा मेल के बाद, क्या होगा? एक्सेप्टेंस कैसे मिलती है? कैसे करते हैं वो? क्या करते हैं? रिव्यू कैसे होता है? कौन रिव्यू करता है? एक ही बंदा, मतलब से साजिद चेयर कर रहा है तो वो 1000 पेपर आए सारे बैठ के पढ़ता रहेगा? टीम होती होगी ना, तो वो टीम आपके ख्याल में क्या होती है? जी आप का कोई इनपुट? कॉन्फ्रेंस पेपर के बारे में नहीं पता, पहली दफा सुन रही है? चले अच्छी बात है कि पहले दफा सुन रही। जी पीछे आपका नाम क्या है? अनम नाम है? समन। चले वो अनम समन मिलते जुलते ही। कोई भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार कंडक्ट करती है, जिसके हम जितने आर्टिकल्स लिखे होते हैं आपको प्रेजेंट करते हैं, और जो एक से ज्यादा आर्टिकल्स हमने प्रेजेंट किए होते हैं, फिर उनके वो पीसीडीज बन जाती है। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पे और आई जी के कॉन्फ्रेंस भी उसको हम कह सकते हैं, सेमिनार भी कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली अ गैदरिंग ऑफ वेरियस रिसर्चर्स based on some criteria, जिसको भी हमने finalize नहीं किया, but there would be some criteria based on which people will be invited to present their work, right? So अब वो criteria क्या है? वो criteria definitely कुछ ऐसा होना चाहिए कि technical significance of the काम को देखा जाए कि जो काम है ये काम ठीक है, as per some standard procedure है। So conferences are conducted by various organizations and bodies. जो प्राइमरी एम ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है, इट इज नॉट द टेक्निकल प्रोवेस और टेक्निकल एक्सेप्टेबिलिटी या टेक्निकल कंट्रीब्यूशन। मेजर एम ऑफ अ कॉन्फ्रेंस इज टू प्रमोट द एरिया,
You conduct conferences to call people from different regions of the world. They come together, they make PR, and they promote the local culture among those people. That is the major aim of a conference. But saying that aside, minimum criteria, a minimum threshold is always fulfilled for the technical contribution as well. If you submit to a conference, then you should be at some level to get acceptance through some process. Again, I would repeat, the major aim is not the highest standard of technical contribution. Major aim is that you are able to collect or gather maximum people from the globe. से कराची की एक यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आ जाते हैं, तो आप देखें वहां पे कितनी प्रमोशन होगी लोकल कल्चर की, और उन लोगों के आने से उस लोकल यूथ को कितना फायदा होगा. They will learn lot of things which they have never learned from their local people. So conference is primary aim is to gather people, to make groups, to make PR, and to promote research among the local audience. Right. अब मैं आपको एक सिर्फ I just show you a sample conference. मैं उसे एक आपको virtual tour कराता हूँ, and उससे आपको idea हो जाएगा जी कि how conference is in fact conducted. अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि conferences में जो papers accept होते हैं, जो invitees होते हैं, they are based on some review process. In fact, both of the papers, they pass through a review process. There is always going to be a review process for both of the segments. For conferences, the review process would only yield either an accept or reject decision. Either your paper will be accept or it will be rejected. Because there is a fixed timeline. हमेशा साल में एक दफा एक जगह पे कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी टाइमलाइंस डिफाइंड होती है. IEEE ICC 2024, it is being conducted in Taiwan from 21st to 23rd August. एक साल पहले अनाउंस हो जाएगा. Now people will start working towards that, and there would be timelines to follow. They will submit their paper. Once they will submit, it will pass through a review process. For review process, there are various tracks in a conference. There could be 20 tracks: network track, project management track, logistics supply chain track, finance track, image processing track. In the right track, you will submit. There will be an associate editor of that track. He or she will assign that research paper to 5 reviewers of that area, known to him or her, and will ask them to review the paper and submit the response in form of accept or reject. अब से आपका पेपर है, हुमा का पेपर है, उसे सबमिट किया है, और उसका डोमेन है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एक एसोसिएट एडिटर उसका चीफ होगा, जो उसमें 5 लोगों को वो पेपर भेज देगा. 5 लोगों से रिव्यूज आ जाएंगे. Based on those reviews, the associate editor will finally decide कि मैंने मैम हुमा को एक्सेप्ट करना है या इनको रिजेक्ट करना है, और इनको इनवाइट करना है कि आके अपना पेपर प्रेजेंट करें या नहीं करें. राइट. 5 के 5 लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, मिनिमम 3 people respond. Then the decision can be easily reached. 2 are in favor, 1 is against. Okay, editor will say accept this paper, and ultimately she will be invited to present her work. And once she will present her work, then after that presentation, that completion of the conference schedule, it will be published in a proceeding, and those papers will be available online in form of, अगर वो किसी बैनर के तहत हो रही हैं conferences, international banners हैं, like IEEE is an international banner. If they allow a conference to be conducted,